students, today I explain exercise 12C which is unitary method. Unitary method bete statement questions in small classes you have done. The question is the cost of 12 notebooks is given. Okay, that is 228 rupees. Okay, so cost of one notebook we have to find out. So 228 divided by 12. Okay, so 12 2s are 12 1s are 12. Okay, 108, 12 9s are 108. So 19 rupees having one notebook. One notebook cost is 19 rupees. Okay, so this is the answer of your question. Okay, but in other questions they are asking more information. ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया. मान लो ऐसे पूछा होता है कि कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स, कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स. ओके, सो मान लो कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स पूछा होता है बेटे, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटे कि 19 मल्टीप्लाई 5. 15 का पूछा था मल्टीप्लाई बाय 15. Okay, so 95 is 95 rupees. Easy, na? So this is the method. Okay, now look carefully. The second one is also same bete. Which one of following is better opportunity, better buy? Okay, so one is a dozen. A dozen means 12 egg for rupees 21. So you have to find out for one egg. Okay, so one egg cost is 21 upon 12. Similarly, in second, one egg is equal to 12 upon 8. You have to divide. Okay, और जो आपको जिसकी कॉस्ट कम होगी वो आपके लिए बेस्ट बाय है. ठीक है, सो डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. ओके, सो सेम क्वेश्चन, उसमें भी इसमें वन नोटबुक की निकालनी थी और सेकंड में वन एग की निकालेंगे बेटे. ठीक है, और जिसकी कॉस्ट कम होगी वो आपके लिए बेस्ट बाय है. ठीक है, नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन. 5 पार्सल कैन बी मेल्ड फॉर 111.75 रुपीज 75. What will be the cost of 11 such parcels? So we have to find out rupees. So what is the statement? The 5 parcel can be mailed. 5 parcel can be mailed in how much rupees? 111.75 rupees. For one parcel can be mailed in 111.75 upon divide. This is divide. In some small classes we have done कि when more things is given for one parcel की निकालनी होती तो हम डिवाइड करते थे. ठीक है, बस इसमें एक स्टेप आपको ज्यादा आ जाएगा बेटे. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी हैव टू फाइंड फॉर 11 पार्सल्स. फॉर 11 पार्सल्स, सो 111.75 into 5 मल्टीप्लाई 11. ओके, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे. अब इसको डिवाइड करना आता ही है जैसे हमने इसमें किया था. ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डिवाइड हियर 111.75 डिवाइड विद 5. ओके, सो 5 to the 10. ओके, 5 to the 10. ओके, then decimal is coming. ओके, then it is 17. 5 3 is 15, 2 5, 5 5 is 25. So it is 22.35 multiplied by 11. Okay, then you multiply 2235 multiply with the 11. Okay, it is 24585. Okay, now decimal after 2 digits. So answer is 245.85 rupees is the cost for 11 parcels.
इजी। सो फॉर 1 नोटबुक का बेटा निकाल रहे थे, आपने 11 का निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 11। अंडरस्टैंड। सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट 7th क्वेश्चन बेटे। 15 मीटर ऑफ सिल्क क्लॉथ कैन बी बाउट फॉर रुपीज 3840 रुपीज 3840 रुपीज। हाउ मेनी मीटर ऑफ सिल्क क्लॉथ कैन बी बाउट फॉर 7936 rupees? Now look carefully. We have to find out how many meter of silk cloth. So we have find length. So which thing you have to find? But that thing you have to take in right side. जो भी आपने जो भी टर्म आपने निकालनी है, मान लो लेंथ निकालनी है, आपने पार्सन निकालना है, आपने पर्सन निकालने हैं, ठीक है, हाउ मेनी, व्हाट, ठीक है, जिसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपको फाइंड करने के लिए बोला वो आपने राइट साइड रखना है, ठीक है। इसमें क्या पूछा, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ। सो इसमें स्टेटमेंट क्या बनेगी बेटे, इन 3840 रुपीज द सिल्क क्लॉथ या क्लॉथ इज परचेज्ड इक्वल टू हाउ मच, 15 meter. Okay, now we have to write the statement opposite because we find out length. So हमको 15 मीटर आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। in 1 rupees बेटे it is 15 over 3840. Okay, we have to find for 7936 rupees. Okay, 7936 rupees। तो हम क्या करते हैं बेटे, मल्टीप्लाई कर देते। ओके, देन यू हैव टू कट बेटे 3840। ओके, देन इट कट बाय 5 tables, 5 3s are 15, 5 7s are 35। Okay, then 3 4 is left, 5 6 is 30, 5 8 is 40। Okay, then you can cut by 4 table, 4 2s are 4 1s are 4, 36। You also check this one. So 4 1s are 4, 3 9, 4 9s are 36, 3 3, 4 8s are 32, 1 6 is left, 4 4s are 16। Similarly here 4 1s are 4, 4 9s are 36। Okay, 8 is left, 4 2s are 8। Okay, similarly again you can cut by 4 table, 4 4s are 16। Okay, 3 8 is left, 4 9s are 36, 2 4 4 6 are 24। Similarly here bete 4 4s are 16, 3 2 4 8s are 32। Again you can cut by 4 table, it is 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1 6, 4 4s are 16। Okay, then again it cut by 4 table, 4 3s are 4, 3s are 12, 4 1s are 4। Okay, 3 3 cut out, so what is left, 31 meter। So we have to buy the cloth 31 meter for 7936 rupees। So this will be the length। Okay, you understand what we have to find out, the length। So हमको length को right side रखना है, ठीक है बेटे। So now look carefully, other part is also same। देखो 11th question having decimal। Okay, so I will explain this one कि a family consume 42.5 liter of milk in 17 days। So how much milk we have to find out। So we put milk in right side। Okay, so how much milk will it consume in 28 days। So in 17 days milk consumed in how much, consumed 42 liter, ठीक है, इक्वल टू 42.5 लीटर।
Okay, so in 28 days we have to find out bete. So firstly find for 1 day. So 42.5 upon 17. So for 28 days bete, so we have to multiply it. Okay, so one thing you have to take care. कई स्टूडेंट क्या करते हैं 17 upon 42.5 कर देते हैं, हमेशा राइट साइड डिवाइड विद लेफ्ट साइड. Okay, so now you know that how to cut upon 10 is coming bete. So you can cut by 17 table. If you have problem you can divide here also in rough work. So 17 3 is 40, it is bigger. 17 2 is 34 bete. So 12 minus 4 8. Okay, then it is 3 minus 3 85. 17 5 is 85. So 25 is coming. Okay, now you can multiply easily 28 and 25. 25 8s are 200. 20 is the carry. 25 2s are 50. 50 and 20 700. You can multiply directly also. You 25 8s are 200. 0, then 20 is carry. 25 2s are 50. 50 and 20 700. Downside is with a 10. So 0 0 cut out. So it is 70 liter milk is used in 28 days. Easy question na? So you have to read the question carefully. Okay, so similarly bete other question in 12th question, one spend in if I spend rupees 385 in 1 week. Okay, and how much do I spend in 1 year? So we have to find out spend. So rupees we have to take in right side. So in 1 week, how many days? 7 days. So in 7 days spend or expenditure, I spend equal to how much? 385 rupees. Okay, in 1 day how much? 385 upon 7 in 1 day, and we have to find out in 1 year. In 1 year 365 days. So we have to take standard. Okay, 366 days in leap year, but we have to take standard 365. So how to find out bete? 385 divide with the 7 you can cut easily bete. So 385 7 5 is 35, 3 5 is left, 55. So 55 is coming bete. So 55 multiplied by with the 365. So you can multiply easily bete. So 5 5 is 25, 5 6 is 30, 32, 5 3 is 15, 15 and 3 18. Okay, so it is 15 and 3 18. Similarly bete 5 4 when you multiply with this 5, so 18 2 5 is coming, 5 5 bete 5 5 to 7 8 to 10 8 to 10 and 2075 rupees is coming. Okay, so this is the cost for a full year. Understand? Look at 14th question bete. A mason gets paid at rate of rupees 98.25 per day. Okay, so 1 day he get 98.25. What will be the pay at the end of Jan? In Jan 31 days, which has 5 Sundays and 4 Saturday. So assume he does not work on weekend. So if he is not working, then he is not getting. Okay, so 9 days we have to subtract. So total working days equal to 31 minus 9. So it is 22 days. Okay, 22 days he is working. Now look carefully. What is the question? For one day
he get for 1 day he paid yeah he get how much rupees, he gets how much rupees, so it gets 98.25 rupees. So for 22 days, okay, so multiply, okay, so 22. ठीक है, it is lengthy question but it is easy than other. Okay, so 1 day 98.5 or 22 multiply in 1 rupees 5 toffees, then in 5 rupees multiply by 5, same like that. Okay, then you can multiply easily. So this is the total paid, you can multiply na. So now look carefully, the question number other are same bete. Look at 17th question. 17th is somewhat different. 20 bags of wheat each weighing 55 kilogram weight cost rupees 8,800. Now here are 3 things bete. So firstly we convert into 2. ओके, क्योंकि हमारे पास देखो 2 डेज हो और रुपीज हो, ठीक है, 3 हो जाएंगे फिर हमको डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको क्या गिवन है देखो, ईच वेइंग, तो फॉर वन बैग द वेइंग इज, फॉर 1 bag of wheat how much, weight is 55 kg. Okay, for how many bags, for 20 bags it will be 55 multiplied by 20. Okay, so 0 2 5 is 10, so it is 1100 kilogram. Okay, similarly for 1 bag of wheat, okay, then find the cost of 35 bag. So for 1 bag of wheat in second condition it is 40 kilogram weight. Okay, for how many, 40 kg, sorry, for 35 bags it will be 40 multiplied by 35. Okay, so 35 it is 140, 0 as it bete. So this is for 35 bags. Now look carefully, now we have 2 things bete, 20 bags and weight. Okay, 35 bags and 1400 weight. Now what we have to find out, find the cost. So cost we have to find out. So cost for what is the statement bete, we have to find out cost. So cost in right side. So what is the statement, for 1100 kilogram weight wheat cost is 8,800 rupees. For 1 kg, for 1800 upon 1100, तो 20 कट आउट बेटे, 11 8 8 रुपीज आ गया बेटे for 1 kg. ओके, वी हैव टू फाइंड फॉर बेटे 35 kg. सो 35 kg का कितना वेट आएगा, 1400. So for 1400 kilogram wheat is 8 multiplied by 1400. So 20 bete. So 8 4s are 32. 3 carry 8 8 3 11. So cost is 11,200 rupees. So I repeat bete. Here are 3 things. One is bag, one is weight, and one is cost. Okay. तो हमने पहले उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया, तो 1 बैग ईच मींस 1. सो 1 बैग का वीट का क्या कितना वेट था बेटे, 55. 20 बैग्स का 1100 आ जाएगा. इस तरह सेकंड कंडीशन में 1 वीट का बैग का वेट कितना था, 40 kg, और 35 का मल्टीप्लाई करके 1400 आ गया. अब ये सेम क्वेश्चन है,
अब 1100 किलोग्राम में कॉस्ट कितनी 1800 8800, ठीक है, और 1400 में आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द इजी क्वेश्चंस, बट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इन 18th क्वेश्चन 12 painters can paint a building in 25 days. Okay, in how many days can 20 painters paint in same building? Now suppose your building is painted. Okay, so firstly 12 painters are there. Okay, 25 days are consumed. If the more painters are coming, then जो वर्क है वो जल्दी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बेटे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन चल रही है। जो हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इट इज इनडायरेक्ट मींस कि कोई भी पहले क्या होता था, कोई चीज इंक्रीज होती थी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होती थी। इसमें ले लो, देखो पहले 1100 किलोग्राम वेट था, 8800 प्राइस है। अब जो हमने वेट इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट भी उसकी इंक्रीज होगी। पर यहाँ पर बेटे ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू अप्लाई इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो हाउ मेनी पेंटर्स बेटे 12 पेंटर्स। 12 पेंटर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन हाउ मेनी डेज 25 days, in 25 days. So one painter can paint in 25 multiply 12। यहाँ पर क्या होगा बेटे, सेकंड स्टेप में हम डिवाइड करते थे ना, बट हियर इज मल्टीप्लाई बिकॉज मोर हियर इज पेंटर एंड डेज आर opposite to each other. Now if we increase the painters 20 painters, so 25 multiply 12 divide by 20 हमने अब डिवाइड में रखना है, ठीक है। अब कट करो, 5 4 5 5 4 3 12 15 days। नाउ यू कैन चेक आल्सो बेटे 12 पेंटर्स थे बेटे, 25 डेज लग रहे थे, ठीक है। अब पेंटर्स इंक्रीज हो गया, अब देखो लेस डे लग रहे हैं, 15 डेज में ही योर बिल्डिंग इज पेंटेड। इजी ना। Okay, similarly 19th question, similarly 20, but I will explain 20th. In an army camp there was a provision for 850 men for 30 days. Okay, the any food, okay, any food is there or provision is there, okay. So however 750 men attended the camp. Okay, अब 750 persons attend कर रहे हैं, ठीक है। पहले कितने थे 850 थे, ठीक है। अब पर्सन कम होंगे तो जो प्रोविजन है, ठीक है, वो हमारे पास ज्यादा दिन चलेगा ना वो, ठीक है। तो here also indirect proportion is applied. So it is 20th question. So in 850 if 850 men attended in camp, okay, then provision is used, provision for 30 days। कैंप कितनी प्रोविजन होती थी, देन प्रोविजन वाज 30 डेज, ठीक है। स्टेटमेंट यू अंडरस्टैंड बेटे कि पहले 8, देखो विच थिंग वी फाइंड आउट प्रोविजन, हमने कितनी डेज निकालना है, तो हमने राइट साइड बेटे उसको पुट करना है। और 1 मैन के लिए बेटे 1 मैन के लिए क्या होगा बेटे प्रोविजन मल्टीप्लाई, सो हियर इज मल्टीप्लाई बिकॉज इसमें भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सिमिलरली बेटे फॉर 750 मैन इट विल बी डिवाइड, okay, so 750 divide 0 0 cut out, okay, 3 2 is 6 1 5 3 5 is 15 5 5 is 25 5 इसको भी 5 पे कट कर दो बेटे, 5 1 is 5 5 7 is 35 0 5 3 is 15 2 0 5 4 is, so for 34 days the provision was there। So thank you very much। So these are easy questions, try other parts बेटे।